This is the second video on numericals of magnetic effect of electric current. In the previous video, that is in lecture number 11, we have done 5 questions very deeply to understand the direction as well as the magnitude of the magnetic field produced by a current carrying conductor. Now in this video, we will be discussing more conceptual questions. So check question number 6 in succession with the lecture number 11. Find the magnitude of field at point O due to the curved and linear portions of the conducting wire as shown in the figure. So we can categorize the curve as this part and the linear portion as this part. तो मैं दोनों को अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ. This is the linear portion. Now check, the linear portion is making an angle of 2 phi. तो इसको आप जैसे कंडक्टर जो भी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना होता है, लेक्चर नंबर 11 में आप चेक कर चुके हैं कौन से डायरेक्शंस आपको नोन है, एंगल्स नोन है. तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो Q point is exactly the midpoint of the linear section PR. So आपको यहाँ एंगल मिला बीटा 1 and this is the angle beta 2. और फिर हम ये डायरेक्शन चेक करेंगे. This is the direction of current in the curve portion. अब इस डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर आप रख लेंगे अपने कर्व्ड फिंगर्स. तो जो थंब है वो आपको बताएगा इनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज गोइंग इनवर्ड. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कर्व्ड पोर्शन इज गोइंग इनवर्ड. और फिर आप अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे फिर आर पी के करंट पर. तो आर पी में करंट इस तरह से जा रहा है कंटिन्यू फ्लो में. सो अगेन थ्रू द ओ fingers are going inward. So the magnetic field due to the linear portion is also going into the plane of the paper. So we will be getting the net magnetic field at point O as the magnetic field due to the curved part plus the magnetic field due to the linear part. Now check beta. This is the curved part. It subtends an angle of 360 degree minus phi plus phi at the center. So in radian we can write it as 2 pi minus 2 phi. Now we will be putting the magnetic field due to the curved part, which is equal to mu naught I divided by 4 pi r into theta. तो थीटा के प्लेस पर आप ले लेंगे 2 पाई minus 2 phi plus the magnetic field due to the linear conductor. तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं. This is linear conductor. At this point we have to find the magnetic field. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे. And if we know these angles in the form of beta 1 and beta 2, as in the present case beta 1 and beta 2 both are equal to phi. तो आप फॉर्मूला लगाते हैं फिर mu naught into I divided by 4 pi into आपके पास ये जो डिस्टेंस है. So this distance is OQ. हाईलाइटिंग इट. दिस इज OQ. तो इसको लिखा हम लोगों ने दिस इज OQ. विद इन ब्रैकेट आता है साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2. बट बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर इक्वल टू फाई. सो दिस विल बी साइन फाई plus sin phi. It means it is 2 sin phi. So we can complete the expression mu naught I upon 4 pi r, 2 common, pi minus phi plus mu naught I upon 4 pi, and in place of OQ we can put r cos phi. ठीक है.
ट्राइंगल में लगाकर देख सकते हैं cos phi का आंसर, and this is equal to 2 sin phi. So we will be taking some quantities common. So this is equal to mu naught I upon 4 pi r, ये हम कॉमन ले सकते हैं, and inside the bracket it will be 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से. So this is 2 common, and inside the bracket it is pi minus phi plus sin phi upon cos phi. Check this. This sin phi upon cos phi will be giving us combinedly tan phi. So you can choose correct option if this question is given in the form of MCQs. Check next question number 7. Two wires A, B, C and D, E, F are arranged as shown in the figure. So we may show them by the separate ways such as A, B, C. Suppose I show A, B, C by the yellow color, and the wire D, E, F is shown like this. Okay. Now we have to find the magnetic field at the point O. इस point पर आपको field निकालना है. तो सबसे पहले previous concept को revise करेंगे. The magnetic field at O will be equal to the magnetic field due to AB plus the magnetic field due to BC plus the magnetic field due to DE प्लस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू EF. आपके पास ये चार पार्ट्स आएंगे. अब ये जो साइन है, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट प्लस लिख दिया है, तो जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये साइंस चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो पॉइंट O है वो AB के एक्सटेंडेड पार्ट पर लाई करता है. AB को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट O आ गया, और DE को जब आप बैक एक्सटेंड करेंगे तो O आ गया. इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय AB as well as due to DE will be equal to 0. तो आपने इन दोनों के प्लेस पर 0 रख दिया. अब मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट होगा ड्यू टू BC as well as due to EF. ठीक है. अब आप लगाएंगे राइट हैंड रूल. तो BC पहले, सबसे पहले, दिस इज BC. सबसे पहले हम BC पर रखेंगे हम. तो O के थ्रू जो फील्ड आ रहा है, O पे कर्ल फिंगर्स करेंगे, तो O से जो फील्ड आ रहा है आपके पास वो आउटवर्ड आ रहा है, मतलब कर्ल फिंगर्स. चेक कर लेंगे. अब आप रखेंगे अपना थंब EF पर करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करते करते O पॉइंट तक ले आएंगे, और फिर से आप चेक करेंगे कि O पॉइंट पर जो कर्ल फिंगर्स हैं उनका डायरेक्शन फिर से आउटवर्ड आ रहा है. सो इट मींस इन रियल सेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O will be given by the addition of both the fields, क्योंकि दोनों के दोनों fields आउटवर्ड डायरेक्शन में है. सो अब हमने फॉर्मूला पुट किया. This O point is situated at one corner of the wire. तो इस वायर को आप ट्रीट करेंगे एक सेमी इनफाइनाइट वायर. तो आपने फॉर्मूला पुट किया म्यू नॉट इनटू I divided by 4 pi. Check this distance. This is A, so it is A plus फिर से म्यू नॉट I divided by, check this distance from E and this is also A as given in the question. आपको फिगर में दिए हुए ये distances. So फिर से आपने पुट कर दिया 4 pi A. So when we add them, we get the answer as mu naught I divided by 2 pi A. Okay. Question number 8 says that a current of 2 ampere is made to flow through a coil
which has only one turn. So आपको एक coil given है और एक ही turn है. Then current is 2 ampere, so we can take I equals to 2 ampere. Number of turns is 1. The magnetic field produced at the center is 4 pi into 10 to the power minus 6. That is B is 4 pi into 10 to the power minus 6 Weber per meter square. Now this word radius shows that the shape of the coil will be circular. So we have to find the radius of the coil. So we will be applying the formula for the magnetic field at the center of circular coil, which is equal to mu naught Ni divided by 2R. So I hope you may do its next part. Solving part बेटा आप कर लेंगे और इसका आंसर आपको मिलना चाहिए रेडियस ऑफ द कॉइल का 0.1 मीटर. In the next question, two parallel wires are situated at a distance of 10 centimeter and 1 ampere current is flowing through the wire. तो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है when the current flows in the same direction in two parallel wires. अगर same direction current हो तो उनके बीच में attractive force लगता है. And if the current is flowing in the opposite direction, then the force acting between them will be the repulsive force. So, by the words two parallel wires are given, situated at a distance of 10 centimeter, 1 ampere current is flowing. So, we have to calculate the force per unit length on each wire. So, we may denote the diagram से दोनों के बीच का distance है suppose d, it is 10 to the power minus 1 meter converted into meter and the current is 1 ampere. Now the expression for the force per unit length acting between two wires is given as mu naught I1 I2 divided by 2 pi into d. So we can put the value of mu naught. सिर्फ mu naught की अगर हम value देखें, this is 4 pi into 10 to the power minus 7 SI. So we can write this as 2 into 2 pi. Hence we get mu naught upon 2 pi equal to 2 into 10 to the power minus 7. So ये पूरा आप combine करते हैं and you put here 2 into 10 to the power minus 7. Current of 1 ampere is flowing in each and the distance between them is 10 to the power minus 1 meter. So this will be 2 into 10 to the power minus 6. Current check कर लेंगे एक बार. Is this 1 ampere? Yes. The current is 1 ampere. So answer will be 2 into 10 to the power minus 6. And by the unit of force per unit length, this will be Newton per meter. And if it would be only force, then the unit we will be checking as the Newton. Next question is the length of a solenoid is 0.4 meter. So as we always take number of turns per unit length in the case of a solenoid. So the length of the solenoid means how we show it. This is a solenoid and it is the length. तो आपको इसकी length यहाँ given है 0.4 meter and the number turns in it is 500. तो इतने length में number of turns, total number of turns will be 500. So we can find the number of turns per unit length, which is 500 divided by 0.4 meter. So this will be number of turns per unit length as 5000 divided by 4. So it will be equal to 1250.
ठीक है। अब आपने लिया the current of 3 ampere is flowing. So I is 3 ampere in a small coil of radius 0.01 meter and the number of turns 10. A current of 0.4 ampere is flowing. So we can check the diagram. इसके बीच में हमने एक coil रखी हुई है of radius this 0.01 meter. Number of turns 10 in the coil is 10 and the current flowing in the coil is 0.4 ampere. So we have to find the torque necessary to keep the axis of the coil perpendicular to the axis of the solenoid. So this is the axis of solenoid and axis of the coil should be perpendicular to the axis of the solenoid according to the requirement of the question. So first we will be finding the magnetic field produced by solenoid, so which is equal to mu naught into number of turns per unit length in solenoid into the current in the solenoid. So this is mu naught into ns divided by ls जो हम निकाल चुके हैं पहले, this is ns into is. So now the formula for torque is magnetic field produced by solenoid जो कि वो coil experience करेगी into I into the number of turns in that coil into area of that coil. So these all will be carrying the subscript C for the coil. Now we can put the expression for torque mu naught और 1250 हम इसका आंसर निकाल चुके हैं into current in the solenoid is 3 ampere into current in the coil is 0.4 ampere. Number of turns in the coil is 10 and area of the coil because the coil is circular. सर्कुलर कोइल का एरिया होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर. सो नेक्स्ट पार्ट टेक इट फॉर डू इट योरसेल्फ एंड यू शुड गेट द आंसर एज 5.92 multiplied by 10 to the power minus 6 Newton meter. So by this series of 5 more numericals we end the lecture. In next series again we will be doing 5 different type of problems. Till then enjoy learning. Thank you.